So, today we are going to start next paper. And that is May June 2022 4-2. हमने मार्च 2022 सॉरी मार्च 2020 का 4-2 किया था. अब हम मई जून 2020 का 4-2 आज स्टार्ट करने लगे. Okay. EDTA4 negative is a polydentate ligand. Explain what is meant by the term polydentate ligand. देखें, poly जब भी prefix में term use होती है तो it means more than one, or you can say many. ठीक है. डेंटेट की टर्म हम यूज करते हैं डेटिव बॉन्ड के लिए, एंड लिगेंड वो स्पीशीज या वो आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डेटिव बॉन्ड बनाते हैं. और डेटिव बॉन्ड हमेशा किसकी वजह से बनता है? इट इज ऑलवेज ड्यू टू द लोन पेयर. ओके, सो वी कैन से दैट polydentate ligand is a species which can form more than one dative bond. और ligand हमेशा जो dative bond form करता है, ligand always form a dative bond with a transition metal ion or the central metal ion to form a complex molecule or a complex ion. So more than one dative bonds with transition metal ion as it have more than one lone pair of electrons. Is this understandable to everyone? Normally, examiner asks you about the monodentate ligand, so you can say that it is a species which can form one dative bond with a transition metal ion, as it have only one electron, one lone pair of electron. Otherwise, examiner asks you about a bidentate. Bi means two, so it is any species, a molecule or an ion which can form a two dative bonds with the transition metal ion, as it have a two lone pairs. Is this clear? If anybody have any doubt or any confusion, you can ask. Okay. Next, when a solution containing EDTA4 negative is added to a solution containing hexa-aqua cadmium 2 positive ion, a new complex is formed, CdEDTA 2 negative. And here you have the equilibrium 1 reaction, which is showing the hexa-aqua cadmium 2 positive ion reacting with EDTA and forming a new complex, as all the water molecules are substituted. All the water molecules are displaced. Circle on the structure of EDTA4 negative the 6 atoms that bonds with the metal ion. तो देखें,
They have told us that there are 6 atoms which are forming the bonds with the metal ion. And as we have discussed over here, that the one which forms a bond with the metal ion must have a lone pair of electron with it. So if you look over here, these nitrogen have a lone pair of electron. These oxygen have a lone pair of electrons. And these oxygens have also a lone pair of electron. So if you count, you will find there are how many atoms? 10 atoms, I suppose. Yes, there are 10 atoms which have a lone pair of electrons. ठीक है, और हमें 6 एटम्स को इनसर्कल करना है जो कि जो है डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, सो these nitrogen and these 4 oxygen. ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन रेज होगा कि फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास 4 ऑक्सीजन है, ये क्यों नहीं डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं इनसर्कल किया. तो देखें, द ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज हैव अ मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन विच आर फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड. उनके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड हियर इट हैव अ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन ज्यादा प्रेफर्ड होंगे जो कि 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म, जिनके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डेटिव बॉन्ड जो है फॉर्म करेंगे ट्रांजिशन मेटल आयन से. किसी को इसमें कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए. यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके. Write an expression for the stability constant K step 1 for equilibrium 1 and state its unit. Okay, do remember, देखें, K step is also like a Kc, but whenever we are uh, writing the expression for K step, you must remember that H2O, the concentration of H2O must not be written. वो नहीं लिखी जाती, बाकी सारी जो है, जो भी स्पीशीज होती है वो हम लिखते हैं. तो इट मीन्स मैं इसको नहीं लिखूंगा, बाकी सबको लिखूंगा. ओके, सो in a product, I have a complex containing a cadmium central metal ion bonded with a 1-EDTA ligand with a whole 2 negative charge. And now I will enclose it in a square bracket. First square bracket is representing that it's a complex sign, and that second square bracket that I put is that it shows that it's the concentration of that complex sign. Now, on the reactant side, we have hexaaqua cadmium 2 positive ion. So CD H2O6 2 positive, and another square bracket for the concentration of this complex sign. Then I have a EDTA with a 4 negative charge and enclosed in square bracket to represent its concentration. And if you look over here, all of these have a 1 as their coefficient, so there is no need to put any power in the K step expression. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. Now they are asking to write for the units. So in numerator we have a 1 concentration,
which is mole per dm cube. In denominator, I have a concentration for two species, so mole per dm cube times mole per dm cube. So I left with 1 over mole per dm cube. And when I make it in a numerator, it will become, क्या हो जाएगा बेटा? Mole inverse dm3. So here I will mention the unit, that mole inverse dm cube. Is this understandable to everyone? Yes, sir. Okay. Now, cadmium ions form complexes with a methyl amine and with 1,2 diamino ethane. Here it is. As shown in equilibriums 2 and 3, 1,2 diaminoethane is shown as En. तो उन्होंने बता दिया है कि इसको आपने किस तरह रिप्रेजेंट किया है, एज अ En रिप्रेजेंट किया है. Here it is. Okay, an equilibrium is set up between these two complexes as shown in equilibrium 4. So if you look at equilibrium 4, in equilibrium 4, they have used this, this, one minute, please. हमारे पास इक्विलिब्रियम 4 में क्या है, एक we have this species, this species, this species, and this species, right? Equilibrium constant for equilibrium 4 is the equilibrium EQ4 for the equilibrium 4. Okay. Write an expression for key equilibrium constant EQ4 in terms of K step 2 and K step 3. जी, आप में से कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कैसे करेंगे? देखें, अगर इक्विलिब्रियम 2 का मैं के स्टेप वैल्यू, के स्टेप एक्सप्रेशन लिखूं, तो इट वुड बी लाइक दिस. एक मिनट प्लीज. ओके, सो I have a CdCH3, sorry, NH24, H2O2, 2 positive, enclosed in the square bracket, divided by Cd H2O6, 2 positive,
एक मिनट रुक जाए, यहाँ पे शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन बना लेता हूँ। के स्टेप 2 CdCH3NH2 4 H2O twice 2 positive divided by CD H2O6 2 positive and CH3 NH2 raised to the power 4। ये के स्टेप 2 की एक्सप्रेशन बनी है। ये इस एक्सप्रेशन में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। अब अगर मैं के स्टेप 3 की एक्सप्रेशन बनाऊं तो के स्टेप 3 की एक्सप्रेशन क्या बनेगी? CD En twice H2O twice 2 positive divided by CD H2O6 2 positive and En square। ये दोनों एक्सप्रेशंस क्लियर है सबको? जी, if anybody have any doubt kindly ask। इन्होंने यहाँ पे आपसे बोला है कि आपने के ई क्यू की एक्सप्रेशन इन दोनों के टर्म्स में बनानी है। अच्छा, अगर मैं के ई क्यू की इक्वेशन की एक्सप्रेशन विदाउट दीज टर्म्स जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी बेसिस पे बनाऊं तो देखें क्या बनेगी। क्योंकि ये इसकी प्रोडक्ट में तो ये यहाँ पे आएगा। और दूसरा हमारे पास इसकी प्रोडक्ट में क्या है? एक मिनट, मैं अभी इसको सेपरेट लिख रहा हूं। CH3NH2 रेज टू द पावर 4 और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है? ये हमारे पास इधर रिएक्टेंट है तो ये यहाँ न्यूमरेटर के बजाय डिनोमिनेटर के बजाय न्यूमरेटर में आएगा। और हमारे पास दूसरी क्या चीज है? एक मिनट, जगह कम हो रही है। एंड आई हैव ई एन स्क्वायर ओवर हियर। ये क्लियर है सबको? ये मैंने इस इक्विलिब्रियम 4, लेट मी हाईलाइट,
इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी है। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। जी, देखें, जब तक आप लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई क्वेरी नहीं होगी, तो मुझे तो नहीं पता चलेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सर इसको एक साथ लेके या अलग लेके कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा ना? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, मगर मुझे आपको ये बात समझानी है। बेसिकली मैंने अलग लिखने का रीजन ये है कि उन्होंने देखे आपको क्या बोला है कि आपने इसकी जो एक्सप्रेशन है उसको आपने इन दोनों की टर्म्स में बताना है। तो डेट इज नॉट माई आंसर। राइट। ठीक है। तो अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अगर आप फर्स्ट वाले केस को देखें, इस वाले केस को, तो ये देखें, ये यही दोनों चीजें, सिर्फ आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स मिसिंग है। राइट। राइट। तो इट मींस कि मैं इसको के स्टेप 3 कह सकता हूं। जी। राइट। यस सर। और अगर आप इस केस को देखें, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, और इसको यहां पे कंपेयर करें, हेयर यू हैव, सो इजंट इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ के स्टेप 2। राइट। तो देखें, अगर ये रेसिप्रोकल हो रहा है तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स इधर ऊपर डिनोमिनेटर में आता, और ये वाला कॉम्प्लेक्स इधर नीचे न्यूमरेटर में आता, एंड दे बोथ गेट कैंसिल्ड आउट। या राइट। सो माय आंसर विल बी के स्टेप 3 ओवर के स्टेप 2। जी बेटा, बाकी सबको भी क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो सेपरेट लिखने की वजह ये थी क्योंकि हमें इस फॉर्म में, जिस तरह उन्होंने बोला है कि आपने इस फॉर्म में इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है, के इक्विलिब्रियम 4 को के स्टेप 2 और के स्टेप 3 की फॉर्म में। जी, गॉट तो सर। सबको क्लियर हुआ? अगर किसी को बेटा कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो काइंडली आस्क। सो के स्टेप 3 ओवर के स्टेप 2, तो आप इस फॉर्म में ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आपको मार्क मिलेगा। अदरवाइज अगर आप वही इक्वेशन देख के कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कोई मार्क नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके। कैलकुलेट द वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट फॉर इक्विलिब्रियम 4 एट 298 केल्विन। ओके, इक्विलिब्रियम 4 के लिए अगर आप देखें तो यू आर प्रोवाइडेड विद डेल्टा एच विच इज एंडोथर्मिक, एंड चेंज इन एंट्रोपी, दोनों गिवन है आपको। ठीक है। और अगर दोनों गिवन है और मुझे गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करनी है, तो द एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विल बी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये एक्सप्रेशन यूज होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है। देखें, ये मिस्टेक होती है,
इट्स किलोजूल पर मोल, इट्स जूल्स पर केल्विन पर मोल। बट अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी का यूनिट देखें तो वो भी किलोजूल पर मोल है। तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये किलोजूल्स में कन्वर्ट हो जाए। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। जी सबको क्लियर है ये बात? यस सर। ओके, सो गिब्स फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच, दैट इज पॉजिटिव 0.840 माइनस टी। टेम्परेचर हमेशा इसमें हम केल्विन में यूज करते हैं और हमें केल्विन में ही दिया हुआ है, दैट इज 298 केल्विन। सो माइनस 298 मल्टीप्लाई बाय 80.9 divided by 1000. Yes, can anybody tell me the answer? Negative 23.3. Thank you. Negative 23.3. So that is my answer. Negative 23.3. Now, what they are saying, state how the value of delta G naught changes as the temperature increases. Explain your answer. जी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? It becomes more negative. जी Delta G becomes more negative. डेल्टा जी बिकम्स मोर नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास डेल्टा एस देखें किस में दिया हुआ है, पॉजिटिव में दिया हुआ है। सो वी हैव अ डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अच्छा, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू। और टेम्परेचर तो है ही पॉजिटिव में, और टेम्परेचर को हम और रेज कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर को मैं और ज्यादा रेज करूंगा तो इट मीन्स कि मैं ये बात लिख सकता हूं कि टी डेल्टा एस इंक्रीजेस, टी डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जी, और अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और मेरे पास बीच में साइन नेगेटिव का है, तो ऑब्वियसली जब मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट अ मोर नेगेटिव वैल्यू। और अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है तो देखिए, आप ऊपर वाले से कंपेयर कर लें। यहाँ पे आपने 298 टेम्परेचर यूज किया और आपका आंसर -23.3 आया है। आप अपने कैलकुलेटर्स में पुट कर लें, वो टेम्परेचर रेज करने की बात कर रहे हैं तो हम 100 केल्विन टेम्परेचर रेज कर देते हैं, एंड 398 इंटू 80.9 divided by 1000, and tell me the answer whether you are getting more negative or less negative. Negative 31.4. -31.4। तो देखें वैल्यू और नेगेटिव हो गई। सो टी डेल्टा एस इंक्रीजेस। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टी डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एंड हेंस gives free energy change will be more negative. Is this part is understandable to everyone? Yes, sir. सर। जी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। ओके, नेक्स्ट पार्ट।
Describe and explain how the solubility of group 2 sulfate varies down the group. Okay. So the trend is group 2 sulfate solubility always decreases down the group, and group 2 hydroxide solubilities increases down the group. So first they ask you to describe the trend and then explain it. So what is the description or the statement? That uh, the solubility of the group 2 sulfates decreases down the group because first point, both lattice energy and enthalpy change of hydration becomes less exothermic. Why is it so? Because as we move down the group, the cationic radius increases, and as the cationic radius increases, the forces of attraction between the ions becomes weaker. और जितनी ज्यादा बॉन्ड वीकर होगा उतनी लेस एनर्जी रिलीज होगी, तो लेस एनर्जी रिलीज होगी, इट मींस बिकम्स लेस एक्सोथर्मिक. ठीक है. बट enthalpy change of hydration decreases more than lattice energy. यानी कि अगर लैटिस एनर्जी फॉर एग्जांपल ये है और ये हाइड्रेशन है, ठीक है, देन दिस विल बी इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, एंड ऑन दिस वैल्यू इट डिपेंड्स. जितनी इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगी उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी. दैट इज द हाइड्रेशन एंड दैट इज अ लैटिस एनर्जी. तो जब साइज बड़ा होगा, ये फॉर एग्जांपल ये मैंने ए के लिए बनाई है, इफ आई मेक फॉर अ बी, तो लैटिस एनर्जी में चेंज जो आएगा वो कम आएगा, बट हाइड्रेशन में चेंज ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू राइट ओवर देयर. तो आपने सबसे पहले तो ट्रेंड बता दिया, ठीक है. ट्रेंड बताने के बाद आपने बता दिया कि दोनों लेस एक्सोथर्मिक हो रही हैं, दोनों की वैल्यूज कम हो रही हैं, बट हाइड्रेशन की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी. Hence, enthalpy change of solution becomes more endothermic, and the more the endothermic enthalpy change of solution will be, the more it is less soluble. वो उतना ही ज्यादा less soluble हो जाएगा. ये बात यहां तक क्लियर है सबको? और अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो ऑक्साइड्स का ट्रेंड पूछा जाता, तो आप सिंपली डिक्रीजेस की जगह इंक्रीजेस मेंशन करते, ये स्टेटमेंट एज इट इज रहती,
ये दोनों एक दूसरे से स्वैप हो जाते एंड मोर एंडोथर्मिक की जगह यहाँ पे मोर एक्सोथर्मिक हो, एंड दैट विल बी योर आंसर when the examiner asks you and to describe the trend about the solubilities of hydroxides. जी क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. Okay. The trend in the decomposition temperature of group 2 peroxides is similar to that of group 2 carbonates. Group 2 carbonates की decomposition temperature से आप familiar हैं. जब हम down the group move होते हैं तो thermal stability increase होती है. We need a more energy, more temperature to break the compound. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो peroxides हैं उनका भी similar trend है. Suggest which of barium peroxide Ba2 and calcium peroxide CaO2 will decompose at the lower temperature and explain your answer. G. If you look at the periodic table, you will find here we have a beryllium in period 2. Then in period 3, there is a magnesium. I am talking about group 2 only. Then in period 4, there is a calcium. And in period 5, there is strontium, and in then period 6 there is barium. So now whether barium peroxide decomposes at a lower temperature or calcium peroxide? Yes. जी कौन लोअर टेम्परेचर पे डिकम्पोज होगा? Calcium, Why? because But you will. Okay. Yes, continue, Ahmed. because it's similar to carbonate, so carbonate's thermal stability increases down the group. ठीक है. So it means my first statement will be calcium oxide will decompose at lower temperature. Now, what will be the reason? polarizing power decreases down. So, yes, Ahmed, you are right, but how you will relate this for this answer? Anybody else who can answer? It has bigger ionic radius, Which has? calcium. No, we are Barium has talking bigger. about barium and calcium. So how could a calcium have a bigger ionic radius than barium? Oh, yes. Calcium 2 positive ion has a smaller So ionic is it radius. is it ion polarization? Yes, it have a greater ion polarization. The greater the ion polarization, the more easily it decomposes at a lower temperature. Right, yes. That's what happens in carbonates and nitrates of group 2. So calcium 2 ion has a smaller ionic radius. So it polarizes peroxide ion more than barium 2 positive ion, and that's why uh, it decomposes at the lower temperature. ये clear है सबको? Yes, sir. If anybody have any query, kindly ask. Okay. Next part. Magnesium iodate 5
and here you have a formula MgIO3 twice, decomposes when heated to form magnesium oxide. It's MgO, oxygen, O2, and iodine I2. Construct an equation for this reaction. Okay, We have the products so and reactant given. sorry. We have products and reactant given. Yeah, Sim- but the only, I think there is a, might be I'm wrong. You can easily make the equation, but let's have a look at the balancing. Yes, who can help me balancing the equation? So oxygen will be 2.5, Yeah, that's good. and Oxygen will everything be, else is correct. yes, the rest of the things are balanced. We have a one magnesium over here, one over here. We have a two iodine over here. We have a two iodine over here. But if you see, we have a six oxygen. So one oxygen is over there. And now I'm getting five oxygen over here, which makes it six as well. Clear है सबको? Calcium iodate is sparingly soluble in water. The concentration of its saturated solution is 5.6 exponent minus 3 mole per dm cube at 298 Kelvin. Write an expression for the solubility product Ksp for KiO3 twice and state its unit. Okay. So what you will do, before writing the equation, I always suggest that before writing the Ksp expression, first write the equation for the dissociation of ion. So if I'll dissociate it, I will get a calcium 2 positive ion and two ions of IO3 negative. तो मेरी Ksp expression क्या होगी? Concentration of Ca2 positive ion times concentration of IO3 negative ions square. Is this clear? Yes. Now they are asking for the units. So we have a mole per decimeter cube for calcium and mole per decimeter cube whole square for iodate 5 ion. So it would be mole per dm cube raised to the power 3. So the unit will be mole cube and dm minus 9. Is this clear? Yes, sir. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए. Now they are saying calculate the numerical value for KSP. Okay. तो अगर आप देखें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये आपको क्या दिया हुआ है? मोल पर डीएम क्यूब दिया हुआ है. इट मींस that I am given with the concentration of calcium iodate 5, that is 5.6 exponent minus 3, right? अगर आप इक्वेशन देखें जो हमने ऊपर डिसोसिएशन की इक्वेशन बनाई है, तो I can say 1 mole of calcium iodate 5 is producing 1 mole of calcium ion. तो calcium ion की concentration भी क्या होगी? 5.6 exponent minus 3. But if I talk about the iodate ions, as they are twice, there are 2 moles of iodate ions. So on dissociation, I will get twice of the concentration of calcium iodate equals to the concentration of iodate ion. ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir.
Now put the values in KSP expression. कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 5.6 एक्सपोनेंट -3 और आयोडेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 2 टाइम्स 5.6 एक्सपोनेंट -3 और इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे स्क्वायर भी है। तो जरा कोई मुझे सॉल्व करके आंसर बता दे क्या आ रहा है। -7.02 exponent -7. 7.02 exponent -7. Hamna, do we have any other figure after this? Yes, 5. Sorry, 5. 5. 5. So see, if you have this figure and you are writing your answer in 3 significant figures, so you must say 7.03 because it's 5. अदरवाइज यहाँ पे अगर आपने 7.02 क्योंकि 5 या 5 से बिगर होगा तो आप राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंडिंग ऑफ का रूल नहीं भूल जा करें प्लीज, इस पे मार्क डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ किया तो आप यहाँ पे 7.02 नहीं लेंगे, 7.03 लेंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? सो इट वुड बी 7.03 एक्सपोनेंट -7। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। आपने अभी क्या बोला इसको 2 डेसिमल प्लेस में क्यों लेंगे? नहीं, मैंने ये बात बोली, देखें, एक मिनट रुके, मैं आपको बात समझाता हूँ। अच्छा, हमने क्या इसके बाद भी कोई फिगर आ रहा था 7.025 के बाद? Sir, it was actually 4.6. So it's a 5 there. ओके, देखें, अहमद में ये बात कह रहा था कि अगर मैं ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख रहा हूं तो आई विल राइट 7.025, ओके। राइट। बट इफ आई एम गोइंग टू राइट इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो मैं इसे 7.03 करूंगा, मैं इसे 7.02 एक्सपोनेंट -7 अगर लिखूंगा तो ये मेरा स्टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट ये रॉन्ग मार्क होगा क्योंकि मैंने राउंडिंग ऑफ प्रॉपरली नहीं की। राइट, यस सर। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है। ऑलराइट सर। ओके, तो आई एम कीपिंग द सेशन टिल हियर फॉर टुडे एंड टुमारो मैं आप लोगों को टाइम कंफर्म कर दूंगा, प्रोबेबली 11:30 या 12 और इन बिटवीन वी विल स्टार्ट एंड वी विल रिज्यूम फ्रॉम ओवर हियर, ओके। यस, किसी को कोई बात पूछनी है, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लें। सर एग्जाम में आंसर्स 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर होता है बस। देखें, नॉर्मली एग्जामिनर आपको बता देगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और अगर नहीं मेंशन हुआ तो कीप इट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके ठीक है, ओके देन, टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज।